सो जो मैं कह रहा था कि उसको पहले तो वो थोड़ी सी कान में कम सुनती थी। हमारे घर में जो है ना गुरुदेव आए थे, इसलिए वो बेल बजा। तो मैं गया था, उनको कुछ काम था, whatever. So she would want to stop whatever she is doing, bending and turning her head slightly so that one ear comes down towards me. मतलब अर्जुआ के दिख में थोड़ा सा कान देती थी उसके near her mouth, and then you Arjo, what say you say what? After I have repeated whatever I said, either she will say never never, मतलब नहीं नहीं, or she would immediately burst out laughing, हंसने लग जाती थी. She would laugh and laugh and laugh until tears run down her cheeks. उनके चीक्स मतलब चीन से गिरती थी उनकी, जो हंसते हंसते एक हमारे आंसू आते हैं ना, आंसू, वही अगर जब तक उनके चीक से नहीं गिरती थी वो हंसना नहीं रोकती थी. हाँ वही poet, the speaker is telling that, and she would continue until she is completely tired and wipe away the tears with the hanging edges of a cloth. Like हमारे इंडिया में जो साड़ी होता है ना, वही उसी टाइप की साड़ी, वो hanging edges of cloth, like that only she is wearing a garment, and उससे उससे ही उन्होंने अपने आंसू पोंछती थी. Now and then of course, but then as soon as another person comes by just to make sure she doesn't forget what it was I had said. मतलब अर्जुआ ने जो भी कहा था, जिस वजह से अर्जुआ की नानी ने हंसी थी, वो जिससे अर्जुआ की नानी मत भूल जाए, श्योर करने के लिए वो अनदर पर्सन जो भी आती थी, ये हमारे घर में भी होता है जब हम छोटे रहते हैं, उसको भी बताती थी, वो भी हंसती थी. और जब तक उसके मुंह में चीक से आंसू नहीं गिरते थे, वो हंसना नहीं रोकते थे. एंड देयर वुड बी मोर 3-4 इवन मोर ऑफ सच लाफिंग एंड स्क्रीमिंग. मतलब हंसने हंसने हंसते हंसते रोने देते, हंसते हंसते रो देते थे इवन. And all that performance on whatever I had said, I found something got confusing in all these, that these no one ever explains me why sometimes I shouldn't repeat some things. मतलब अर्जुआ कह रही है कि क्यों नानी समटाइम उसको कहती कि ये तुम नेवर रिपीट, नेवर नेवर, और समटाइम्स दे वुड कंसिडर सो फनी, जो थिंग है उसको जो बहुत ही कंसिडर फनी होता है, और दे वुड रिपीट इट सो मेनी टाइम्स फॉर पीपल समझे, और वो हंसते ही रहते हैं. ये अर्जुआ की शिकायत है. व्हाई समटाइम्स नानी सेज मी दैट नेवर नेवर, और समटाइम्स यू नो it will be considered so much funny that people will go laugh and laugh until there are 3 or 4 tear-faced grown-ups. You see how neither way of hearing me out of encourage me to express too often. Like all this business to do with my legs, I have always wanted to tell them not to worry, I mean Nana and my mother, that it did not have to be an issue of a two favorite to fight over. But I didn't want to told it repeat or consider so funny that anyone would laugh me until they cried. After all, they were my legs. When I think back on it now, those two, Nana and my mother, must have been discussing my legs from the day I was born, when I'm sure, when they came out line of sweet, soft, silent, the wall of lies and complaints, the first topic was Mr. Legs. So, the thing is here, उसका जो बिजनेस था उसके लेग से ही था, उसका नाना मतलब ग्रैंडमा और मम्मी का. Now, the main theme, Arjoa's legs were very much thin, and the problem that her nana and mother thought that when she will grown up, then she'll face problem to bear a children in her womb. Of course, after a girl grows up, she completes education first, of course, marries, then have child. That only her grandma is saying she will not be able to bear children. So Arjoy is telling, but I don't want you to tell me otherwise. They will consider so funny, and until they cry after they wear my legs. जो भी हो, वो अर्जुआ के पैर ही तो है. उसको तो खराब लगता है जब अगर कोई हंसता है उसमें. सो वही अर्जुआ कह रहा है कि after all they were my legs. Nana and my mother must have been discussing from the day I was born. जब से अर्जुआ का जन्म हुआ तब से ही
उसको लगता है ये टॉपिक पे वो सब डिस्कस करता है। नाउ ये लाइन बहुत ही जरूरी है। When I am sure the world I came out of the land of sweet soft silence, मतलब मम्मी के womb से जब मैं निकली वो था land of sweet soft silence, into the world of noise comprehension। ये जो वर्ल्ड हम लोग जी रहे हैं जिस वर्ल्ड में, इसको ही हम कहते हैं वर्ल्ड ऑफ नॉइज एंड कंप्रीहेंशन इन द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर। इन द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर फर्स्ट टॉपिक में इट वाज माय लेग्स। मतलब एडजॉय कह रही है जब मैं बाहर आई लैंड ऑफ स्वीट सॉफ्ट साइलेंस, मतलब मम्मी के वूम से जन्म हुआ मेरा, तो द फर्स्ट टॉपिक शी मेड वाज द हिज लेग्स इनटू द वर्ल्ड ऑफ नॉइज एंड कंप्रीहेंशन, जो कि दुनिया है, आज की दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं। That discussion was repeated very regularly. Nana, you know Kaya, I thank to my God that your very first child is female, but Kaya, I am not sure about her legs. And Nana would shake her head. Mommy, mother, why you are always complaining about Joa's leg? If you ask me, Nana, they are too thin. Nana is telling they are too thin, and I am not asking you. Nana has many voices. There is a special one used to shut everyone up. ये हर वक्त डिस्कस होता था। नाना, यू नो काया। नाउ यस, Arju's mother's name is Kaya. Please note down. Arju's mother's name is Kaya. Arju's mother. Arju's mother's name is Kaya. So that is only her mother is telling her daughter that her granddaughter legs are so thin. That is only the problem. Mother, why are you always complaining? Why? Because they are too thin, and perhaps when she will grow up, we will not be able to have a child in her womb. Whatever, in the point of view, if we see that is a very far, that thing is very far to happen, and then also his granddaughter, his grandmother, sorry, always complains about this. Nana, they are too thin, and Nana is saying they are too thin, and they are spindly. Please note down spindly. That's so spindle. Like butterfly or some flies. And I am not asking you. Nana has many voices. हमारे घर में जो बड़े होते हैं ना, उसके पास वॉइस होते हैं, थोड़ा मिठास वॉइस, कड़वा वॉइस। हाँ, वही कहना है, नाना का जो कड़वा वॉइस था वो क्या करते थे, इस वॉइस को सबको चुप करने के लिए यूज करते थे, व्यवहार करते थे इस वॉइस का। Now, some people have no legs at all, my mother would tell, but Arjua has legs, Nana would insist, except they are too thin and also too long for a woman. वो बहुत ही लंबे थे और बहुत ही thin, spindly थे। Kaya listen once in a while, but only very long. While somebody decides nature, child, spirit, mother, an accident happens, somebody gets born without arms or legs or both of them, and then let me touch. Is a sad piece, and such things are not talking about everybody. But if any female child decides to come into this world, then with legs, then they might as well be legs. Now नाना कह रहे कि अगर कोई बिना हाथ, बिना पैर, बिना लिम्ब के आता है तो ठीक है, वो नेचर्स का डिसीजन है। बट अगर कोई फीमेल बच्चा इस धरती पे आना चाहता है पैर के साथ, देन दे माइट एज वेल बी लेग्स, देन वो थोड़े से मोटे होना चाहिए, उस पे मीट होना चाहिए, जिससे कि वो बड़ी होकर एबल टू हैव हर चाइल्ड। समझ में आया आपको? What kind of legs? And always at that point I knew from her voice that my mother was weeping inside. मतलब रो रहे हैं अंदर अंदर के कमरे में, बट वो नाना नेवर हर सच इनसाइड वीपिंग। नाना को सब पता है, पर वो कभी रिएक्ट नहीं करती थी। नॉट दैट यू हैव स्टॉप नाना इवन शी हैड हर्ड इट। वो सब जानती थी, फिर भी उनको कोई रिएक्शन नहीं था, which always surprised me। अज्जो को वो सरप्राइज लगता था, because always about almost even she was her only child, everything always apart my legs। Nana is a such good grown up। In any case, what I do know about good grown ups and bad grown ups। How could Nana be a good grown up when she carried on so about my legs? अज्जो कह रही है नाना गुड ग्रोन अप नहीं है, एक बड़े लोग एल्डर नहीं, गुड व्यक्ति नहीं है,
क्योंकि हर वक्त वो इसी टॉपिक में रहती है, किसी को इमोशन को नहीं समझती. So as I keep saying, if any woman decides to come into this world with all of two legs, then shoes should be select legs they have meat on them. I told you, दोनों सा मीट होना चाहिए, मोटे छोटे होना चाहिए, with good calves. जो हमारे जॉइंट होते हैं हमारे लेग्स के, because you are sure such legs would support solid hips, and a woman must have solid hips to be able to have children. कहाँ तक उसकी नानी सोच रही है, अभी जो बच्ची है वो उसके चाइल्ड होने के वक्त पर सोच रही है कि such because you know solid hips are required to able to have children. Oh mother, that's how my mother would answer, very quietly, and the discussion would end, or they would move on something else. Something Nana would pull in, something about my father, हाँ उसके पिता के बारे में कुछ. How looking at such men we have to humble and admit that after all God's children are many, and how after only one daughter had insisted on marrying a man like that, you still have to thank your God. The biggest problem you got that granddaughter with spindly legs, that they are too long, and women, and now अर्जुआ की माँ उसकी नानी को कह रहा है कि किसी की तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो उसकी पैर नहीं होती, हाथ नहीं होती, अंधी होती है, whatever. हाँ, but you know you have only a biggest problem you got is a very small problem, and that is only having a granddaughter with spindly legs that are too long for a woman and too thin of to be a news. Only यही प्रॉब्लम थी, फिर भी बहुत कम प्रॉब्लम थी, पर किसी की तो इससे भी बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, इससे भी तो प्रॉब्लम होती है. द बिगेस्ट प्रॉब्लम यू गॉट, हैव ए ग्रैंडडॉटर which that is too long for a woman of any use. That are too long for a woman, too thin and too long for a woman, too thin for any use. किसी व्यवहार के लिए ये बहुत ही थिन थे और बड़े थे. यही नाउ एडजॉ की माँ उसकी नानी को कह रहा है. अंदर में समझ में आया? The way she always added that bit about my father under her breath, she probably didn't hear, but I always heard it. Plus, what is always shut my mother for good, so even if I not actually heard the words, once my mother looked like even how little courage was finished, I could always guess what Nana had as argument. उसका आर्गुमेंट वही था, उसके उसके पापा के बारे में, किस आदमी के साथ उसके बेटे ने शादी किया कि इस तरह की जो ग्रैंड डॉटर आई, और व्हाट आर्गुमेंट फिनिश्ड करेज. हाँ, लाइक इवन वाज लिटिल करेज, ऐसे नाना उसकी मम्मी को कह रही थी कि उसकी मम्मी की जो लिटिल करेज होती थी ना, वो फिनिश हो जाती थी. Legs that have meat on them with good scalp support solid to be able to bear children, have children. So I wish that one day I would see for myself the legs of many women who had linted. जो की जो विश हुई कि उसको देखना था कि जिस हिप्स सपोर्ट कर पाएगी चिल्ड्रन, उस लोगों को मुझको देखना है. But in the village that is not easy. The older women wear long wraps all around them. वो हर वक्त पैर को एकदम नीच तक, अपने फीट तक ढक रखती थी. हाँ, जो खाना में जो ड्रेस होता है आपको पता ही है, काला करके काला चद्दर से पूरा बॉडी ढका रहता है वुमेन लोग का. I had never the chance. It took a lot of begging, just my mother and Nana to get little splash around the shallow end of my river with my friend, who were other little guys than me. For proper was, we used to take a small bathhouse behind her hut. Therefore, the only naked female legs I have ever really seen, those are the girls like me, or other older girls in the school, and those of my mother and Nana, two pairs of legs, which are most surely beyond the approved type, because Nana gave birth to my mother, and my mother gave birth to me. उसको जो पैर दिखते थे वो ओनली उसके फ्रेंड्स के थे, और ओल्डर गर्ल्स इन स्कूल, और अदर उसके मम्मी के और उसकी नानी का, मतलब नाना का. Because and they are all sure of approved type, because Nana gave birth to her mother and her mother gave birth to Arjua. So why they are approved kind? You understand, I think. So that is the point, because Nana gave birth to her mother and her mother gave birth to him, her, Arjua. It is only why this they are of approved kind. Their legs, Nana's her mother's mommy's leg are of approved kind. Why? I told you the reason, very important reason.
According to the older boys and girls, the distance between the little village and small town is about 5 kilometers, and 5 kilometers is really a long distance. Nowadays, you people can't walk. I know. I don't know what 5 kilometers mean. They always complain how long is it to walk. But अर्जुआ के लिए वो बहुत ही कम डिस्टेंस था. वो पैदल ही जाती थी, पैदल ही आती, मतलब वो चलने में बहुत पसंद करती थी. But to me, we live in our village and walking those kilometers didn't matter. School is nice, school are nothing. नाना तो जिसके हैप्पी टू नाना thought it was a waste of time. नाना को लगता था ये waste of time होता है स्कूल में जाना. I never what she mean. My mother student now disagree. She kept telling Nana, she is my mother. She was locked into some kind of darkness. She didn't go to school, so that if her daughter Arjua could learn to write and read something, perhaps be able to calculate some things on paper, that would be good. नाना ने कभी भी उसकी बेटी को स्कूल जाने का अपॉर्चुनिटी नहीं दिया, जिससे कि वो अनपढ़ रह गई, इलिटरेट रह गई. वही उसकी वही अर्जुआ की मम्मी कह रहे कि अगर उसकी बेटी थोड़ा सा पढ़ना लिखना सीख जाएगी, perhaps that it be good, वो अच्छा होगा. It could always marry later and may be able to have children. इसीलिए यहाँ पर डॉट 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 दिया है. I could always marry later and may be able to have children. Nana would just laugh. Ah, maybe with legs. हमारा हाँ, Nana would just laugh. Ah, maybe with legs like hers, she might as well go to school running with her classmates. Oh हाँ, इस लाइन. Nana would just laugh. वो सिर्फ हंसती थी. As maybe with legs like her, इसकी जैसी legs से ये go school जाती हैं. Running her classmates with a small photo and winning first by each time never seemed to me. आज जो हर वक्त फर्स्ट आती थी उसके स्कूल पे स्पोर्ट्स कंपटीशन में. हाँ, एनीथिंग अबाउट विच टू टेल एट वन एट होम. ये उसको कुछ बड़ी बात नहीं लगी. वो कभी उसके घर में नहीं बताया. पर एक दिन एक थिंग अलग घटी कि आई डोंट नो हाउ द टीचर डिड लर्न फॉर द जूनियर सेक्शन ऑफ स्कूल इन द डिस्ट्रिक्ट गेम्स. वो डिस्ट्रिक्ट में गेम्स में लिए सिलेक्टेड हो गई. बट दे डिड. When I went home to tell my mother and Nana, they उसके ऊपर विश्वास नहीं हुआ. मतलब अर्जुआ के ऊपर विश्वास ही नहीं हुआ कि वो डिस्ट्रिक्ट गेम्स के लिए सिलेक्टेड हो गई. एंड नाना उसकी नानी स्कूल चली गई स्किन प्रॉपरली. और जब उनको पता चला, she came home to tell my mother, it was really true. They can't believe I was one of my school runners. Is that so? exclaimed my mother. मतलब उसकी मम्मी बहुत खुशी थी, पर वो उतना एक्सप्रेस नहीं करने की, क्योंकि उसकी नाना हर वक्त गुस्से में आ जाती थी. Whatever. Her mouth moved as they were tell Nana that after all they were secret about me. She couldn't be expected to share with anyone. But Nana herself expected to share with anyone. Nana herself looked so pleased at her surprise. My mother shut her mouth up. In any case, in the first time they heard the news, I have often caught Nana staring at my legs. With a strange ignorance, but still pretending like she was not looking. All this week she has been washing school uniform herself. जब से उनको पता चला कि अर्जुआ ने डिस्ट्रिक्ट गेम्स पे उसका नाम आ गया है, सिलेक्ट हो गया, वो दौड़ेगी डिस्ट्रिक्ट गेम्स से, उसको बहुत ही प्राउड ना हुआ. वो बहुत ही खुशी होने लगी. बट प्रिटेंड कर रही कि नहीं, वो पहले से ही थी, पर अंदर अंदर बहुत खुशी. क्यों? proofs are given. All these weeks she has been washing my school. उसकी स्कूल ड्रेस को धोते ही रही है. And it didn't stop. She went even Mr. mentions how to borrow this charcoal pressing iron. अरे charcoal pressing iron क्या होता है? I think तुम लोग ने नहीं देखा होगा. तो चारकोल प्रेसिंग आयरन ना, वो हमारा कोल है ना, उसके ऊपर वो मोटे आयरन को रख दिया जाता है, फिर कपड़े से धोकर उसको प्रेस कर देते थे. वो पुराना जमाने में होता था. हाँ, अब तो इलेक्ट्रिक आयरन हब सबके घर में वो 500 550 550 का आता है, वो ठीक है. पर अर्लियर जमाने में ये होता था कि चारकोल को जलाने उसके ऊपर मोटा आयरन का स्लैब रखता होता है हैंडल के साथ. फिर जब वो गर्म हो जाता है, वो कपड़े से उसको धोकर पकड़कर प्रेस करा जाता था. Whatever, that is charcoal pressing iron. I think you all have understood. Otherwise, search in Google, you will get. Okay. So otherwise, I will show you. Wait, I will show you what is charcoal pressing iron. Charcoal pressing iron. Sorry, I wrote price. You see, this is charcoal pressing iron. You see, I think all are able to see it. ये अंदर जो चारकोल भर दिया जाता था, सॉरी मैंने गलत कहा, इसके अंदर चारकोल भर दिया जाता था
और जो क्या होता था इसके जो हीट इम्पार्ट होता था, एज यू नो हीट फ्लोज फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, कपड़ा ठंडा होता था, इससे हमारा प्रेस होता था। नाउ ये बहुत ही सेटिस्फाइंग नहीं था क्योंकि काला हो जाता था, समटाइम्स कपड़ा काला हो जाता था। So I showed you charcoal iron, that is charcoal iron, and mentions house से वो borrow करके लाती थी। Back home and around there until they would cry that I will be the iron, I would say that enough। मतलब वो इतना आयरन करती थी कि उसके बहुत ही मतलब अगर जो वो कपड़ा होती थी वो भी बोलती कि बस करो बहुत आयरन किया, मतलब इतना वो ध्यान से करती थी। वेयरिंग माय स्कूल यूनिफॉर्म दिस वीक हैज बीन वेरी नाइस एट द पैरेड एट द फर्स्ट when it caught the ray of the sun and shone brighter than everybody else uniform। किसी और के यूनिफॉर्म से ये बहुत ही ज्यादा चमकी इस वीक, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स वीक में। ईच आफ्टरनून शी हैज पुल्ड वन ऑफ द शेड ऑफ फ्रेश ओल्ड क्लॉथ फ्रॉम द बिग ब्रास बोल। कहां से वो अपनी कपड़े पहनती थी? बिग ब्रास बोल से। एंड दे वर सो स्टीफली स्टार्च्ड। ये हिंदी में हम बोले ना, ये इसको मार देना पड़ेगा ये कपड़े को। इसी को कह रहा है, यू नो हमारा नानी जो पहनती है, नानी पहनते हैं ना घर में, वो क्रक क्रक करके जो, आप सबने सुना है, अगर सुना है तो कमेंट करना, हम सुनेंगे। क्रिक क्रिक करके जो आवाज होती थी, वही यहाँ पर कह रही है कि दे आर सो स्टिफली स्टार्च यू कैन हियर द क्लॉक क्रिक व्हेन शी पासेस बाय। जब से वो पास में से जाती थी उसे कपड़े की क्रिक आवाज सुनाई देती थी क्योंकि वो सो स्टिफली स्टार्च थी। बिकॉज बट शी वॉक वे बियॉन्ड द स्कूल एज दो शी वाज ऑन द वे टू सम प्लेस। बट वो जो कि ही फॉलो करती थी, वो प्रिटेंड करती थी कि वो उसके अन्य काम में जा रही है, पर वो जॉब को ही फॉलो करने आती थी क्योंकि उसको बहुत प्राउड फील हो रहा था। वो बहुत ही प्लीज थी अर्जुआ के इस अचीवमेंट में कि अर्जुआ डिस्ट्रिक्ट गेम्स में लिए सिलेक्टेड हो गई। यस आई हैव ओन एवरी रेस आई रन, won every race I ran in my school। I won the cup for best all round junior athlete। और यो ये प्रतियोगिता जीत भी गई। और इसने अर्जुआ ने ये प्रतियोगिता फॉर बेस्ट ऑल राउंड जूनियर एथलीट के लिए प्रतियोगिता जीत भी गई। और नाना को इतनी खुशी हुई कि उसने जो कप है उसको बच्चे की तरह अपने कंधे पर बिठा के लाई। When we had a gleaming cup, she would do it। Huh? Nana, yes, Nana said that didn't care if such things are done. She would do it. You know what she did? She carried the gleaming cup on her back like they do with the babies। बच्चे की तरह वो कप को अपने कंधे पे बिठा के ले आई। And that's this time like other precious thing like सोने के लिए, सोने के जैसे उसको उठा लाई। And this time nothing, no talking, not talking about the trouble to walk by herself। कोई भी ट्रबल नहीं है उसको इतनी दूर तक पैदल चल के आने में। When we arrived in a village, she entered her compound to the cup of my mother before going to the headmaster। Oh, grown-ups are so strange। Nana is right now carrying me on her knee, crying something, muttering that saw thin legs can also be useful। मतलब उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि जस्ट इससे ये थिन लेग्स भी बहुत ही काम के हुए, जो कि एक बेस्ट ऑलराउंड जूनियर एथलेट के कंपटीशन में ओन कर गई एक प्राइज। then who even though some just each of them carry, then the thin legs can run, then who knows that that these legs can't carry children, may will be able to carry children in her womb। मतलब अगर इतने स्पिनली लेग्स एक रेस कंपटीशन जीत कर प्राइज ओन कर सकते हैं तो कौन पता है, किसको पता है कि एक दिन ये भी will have to able to bear children। I don't know too much about such things, but that's how I was feeling and thinking all alone, that surely one should to be able to do other things with legs as well because they can support hips to make babies। Except I was never very sad of thing aloud because something would never tell me never to repeat her or else they would have laughed so much। फिर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम था कि ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं हुआ कि क्यों मुझको कभी कुछ नहीं कहना चाहिए, जो कि नेवर नाना कहती है। और समथिंग जो कि मैं कहता हूँ जो कहती है वो कंसिडर्ड होती है इतनी फनी कि वो हंसते ही रहते, नाना हंसते ही रहती है। और इवन दिस वुड रिपीट टू even two or more such old-faced grown-ups, or they have laughed so much what I said they would have cried। इतना हंसती थी वो
हंसने लगा, रोने लगे थे. It's much better this way to acted it out to show them. Although I could not have planned it. As for my mother, she had been speechless as usual. उसकी मम्मी इस वक्त स्पीचलेस हो गई थी. उसको इतनी खुशी हो रही थी कि उसके डॉटर ने एक मैच को, मतलब ऑल राउंड जूनियर एथलेट इन डिस्ट्रिक्ट के प्राइज को ओन किया है. तो उसकी मदर इतनी खुशी थी कि शी वाज स्पीचलेस. बट द ओनली प्रॉब्लम फॉर अजय वाज व्हाट, दैट समटाइम क्यों उसको कुछ थिंग रिपीट नहीं करना चाहिए, और जो नाना नेवर नेवर कहती है, और कुछ कहना चाहिए कि जब सब हंसते ही रहते हैं, और जब तब तक हंसते रहते हैं जब तक वो रो नहीं देते हैं. हाँ, तो यही इसकी प्रॉब्लम थी. और इस बार उसकी मम्मी स्पीचलेस थी बिकॉज उसकी नाना, मतलब उसकी मम्मी, मतलब अज्जवास की नानी ही, मतलब नाना मदर्स मदर ओनली वाज सो मच प्लीज्ड that her behavior fully changed towards Ajwa. I think you all have understood. So thank you students for attending the class, and don't forget to subscribe our channel. This was the full explanation of your chapter, very important chapter for this year ICSE. That is a girl who can, and you must learn this chapter. This question has not came, so there are 90% probability of question coming in your upcoming ICSE year. So my last request, my honest request, don't forget to subscribe our channel, like the video, and press the bell icon so that as soon as I post a video, you all get notified. Thanks for watching the video students, your own channel, Ganguly Educator. Seeing you all in the next video. Thank you, bye bye.